Good morning students, welcome to Commerce Gyanpeeth. Today we'll start with the new chapter Negotiable Instrument. Negotiable Instrument समस्ते सब किछि आइडिया रखिथिबो ए विषय हैला बीकॉम रे हो फाउंडेशन रे हो सब जारे हो Negotiable Instrument रो किछि ना किछि आइडिया थिबो बट एथिरे जहा भी केस लॉ क्वेश्चंस आसुछि सेथिरे मेजर डिफरेंस ता कोन होछि सेडा हमें देखियार अछि हैला की पॉइंट डिफरेंस जहा भी अछि माने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जहा भी अछि से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रो की पॉइंट्स जहा भी डिफरेंशिएटेड थाउछि से पॉइंट को धरि कि से क्वेश्चन पहुंचछि हैला बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मु आगुड कहि दोछि एथरो इंपोर्टेंट पोर्शन कोन सबुड बेसी इंपोर्टेंट पोर्शन कोन एग्जाम ओरिएंटेड होछि ए जाग पेज नंबर 124 124 स्टार्ट करियो तमे डिफरेंसेस देखि पारियो एडी प्रॉमिसरी नोट चेक प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक एजा सब अछि देखो ए तीनटा डिफरेंस जोडा अछि सेडा तमे माने बहुत थरोली मन रखियो पड़े thoroughly in the sense मु कोन पे कहूची ए भितर तुमको तीनटा जिंस कवर हेउची कोन कवर हेउची ध्यान से सुनो फर्स्ट थिंग होची हमर मीनिंग कवर हे जोची सेकंड थिंग होची कंपैरिजन माने तुम जान दे पारियो कि मीनिंग जानला परे जो जिंस एडी लेखा हेनी सब जागा तार सिमिलरिटी हेतिबो आउ गोटे सबटु इंपोर्टेंट थिंग कोन ना की डिफरेंसेस माने कौन की डिफरेंसेस इन द सेंस माने मेजर पॉइंट कोन ना स्लाइट डिफरेंस कोन रहउची चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज भितरे ऑलमोस्ट सब जगह सिमिलरिटी थाउची बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ प्रॉमिस अगेन से प्रॉमिस जदी कहउची तो प्रॉमिसरी नोट से तो कोन डिफरेंस थाउची एजा होची हमर कोन की पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड आर फ्रॉम थ्री की डिफरेंसेस ओनली की डिफरेंसेस लागा से पछरे तो एटा ध्यान रखी हमें चैप्टर टा स्टार्ट कर Negotiable instrument रो फर्स्ट यूनिट एडा देखो फर्स्ट होची द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैला फर्स्ट थिंग कोन ऑब्जेक्टिव कोन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रो ताड अगर हम देखिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो मीनिंग कोन व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबिलिटी negotiability रो मीनिंग कोन इट इज ट्रांसफरेबिलिटी फाइन एटा ट्रांसफरेबिलिटी सहित सिमिलर बट ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेगोशिएबिलिटी रो गोटे स्लाइट डिफरेंस अछि कोन डिफरेंस अछि नेगोशिएबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी रो negotiability means मु कहूची देखो नहीं मनी ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी कैन बी एनीथिंग माने इजीली सिंपली ट्रांसफर करि दबर सिंपली ट्रांसफर इमती नहीं कि सेटा ओनरशिप राइट दोची किंबा से कोन गोटे पर्सन को तार वैल्यू असाइन करची इमती किछि भी नै ट्रांसफरेबिलिटी माने मु जदी कहली कि ए फोन तू ताको दे दे तो मु फर्स्ट ताको ट्रांसफर करली से तो ट्रांसफर करला बट नेगोशिएबिलिटी माने कोन मु ए फोन जदी तते दोची तो दिस इज कैरिंग सम वैल्यू फॉर यू आल्सो माने मो पे सेटा जति की वैल्यूएबल तो पे भी सेति की वैल्यूएबल आई एम गिविंग समवॉट ओनरशिप राइट्स देयर so this is the key point of difference between negotiability and transferability negotiability रो मीनिंग कोन assigning almost similar value assigning almost similar value assigning almost similar value assigning almost similar value lekho whereas transferability means simply transferring the physical aspect
simply transferring the physical aspect, simply transferring the physical aspect तापर देखो the objective. What do you mean by the objective of having negotiable instrument? A जिनसर major objective होची to simplify the transaction in money, to simplify the transaction in money. एबे जदि आजिरो डेट रे जदि तुम कहियो कि ट्रांजैक्शन केमती सिंप्लीफाई हे जेछि तो तमे कहियो कोन यूपीआई लागि हेछि कहि, बट एक्ट कोन स्पेसिफाई करछि ना लीगलिटी असाइन करिया पई जदि तमे किछि यूपीआई रे ट्रांजैक्शन करूछ हैला, जदि मनर गुटे क्रेडिट पीरियड टा एस्टैब्लिश हैला तमर आ तमर कस्टमर भितरे यूपीआई रे तो एमती किछि नाइ कि सीए तुम गुटे लाइक सिक्योरिटी देबो लीगली एस्पेक्ट किछि असाइन करी सिक्योरिटी देलाळे तो किछि नै तो दैट्स व्हाई कोन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो पार्ट टास्क. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रे कोन होची ट्रांजैक्शन आगा सिंप्लीफाई होची, बट एडी कोन असाइन होची ता सहित ना लीगलिटी असाइन होची ना देयर इज सम लीगल एस्पेक्ट कोन पई ना जे तुमको लायबल अछि पैसा देबा पई से जदी किछि दोनी तो से डरिबो गुटे जिंस को धरि कोन ना एडा लीगली असाइन हेची लीगली बाउंड हेची तो अदर पर्सन कैन स्यू मी. तो लीगलिटी रा एस्टैब्लिश करके ट्रांजैक्शन सिंप्लीफाई करियार होची नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव ऊपर कोन ऑब्जेक्टिव होची simplify transaction, simplify transaction along with simplify transaction along with establishing legal security, along with establishing legal security. negotiable instrument रो ऑब्जेक्टिव से खाली कहि देखो सिंप्लीफाई द ट्रांजैक्शन इन मनी हैला, तो सीए कोन कहूची ना गोटे बड़ लाइन ला सेडी कहूची कोन सच दैट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ मनी पीपल डू नॉट फॉल प्रे टू थेफ्ट्स, रॉबरी कमिटेड ऑन रोड एक्सेट्रा. तो कौन जदि पैसा तुमको 1 लाख रुपीस के दउची तमे धरि के जाओ आराम से तो मे बी रॉबरी हे परियो, मे बी कोडी पड़ी जाई परियो कि आउ के तुमको बाडे की मार के जा हाले से धरि के पळे पारेबो, बट जदि के चेक दउची तो चेक देले तुम सेटा इजीली कैरी करि परियो हैला, आ रॉबरी आउ थेफ्ट हेबार चांसेस भी बहुत कम हबो. तो सीए कोन कहूचे देखो ना ट्रांजैक्शन तो सिंप्लीफाई करछ ता सतो से कहूचे कोन ट्रांसफरेबिलिटी दा भी इजी करछ. तो आउट ऑब्जेक्टिव कोन ऐड हला हम रेडी. फर्स्ट थिंग होची सिंप्लीफाई ट्रांजैक्शन, second thing होची establishes legal security, third thing होची easy transferability, easy transferability, easy transferability. clear? लिखिए. Such negotiable instrument came to be legalized and regulated through the Negotiable Instrument Act 1881. Please underline 1881. 1881 होची कोन केबे ए जिंसडा put into practice हला, came into effect or put into practice हला. एबे देखो से फर्स्ट थिंग होची हमको ऑब्जेक्टिव कहला, एबे सी मीनिंग कोच एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स माने कोन दोस डॉक्यूमेंट्स. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर नथिंग बट डॉक्यूमेंट्स. को प्रकार डॉक्यूमेंट्स ना दैट एविडेंस अ कंट्रैक्चुअल राइट. एडा कोन कहला सेकंड वर्ड टा कहला हमको एविडेंस माने कोन दीस आर अ प्रूफ, दीस आर अ प्रूफ ऑफ व्हाट अ कंट्रैक्चुअल राइट टू क्लेम पेमेंट एंड व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड अपॉन डिलीवरी. माने से अल्टीमेटली कोन होची नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होची गुटे प्रूफ जोडा कि गुटे क्रेडिटर और डेटर भितरे हे पारिबो, तांकनी गुटे प्रूफ हिसाब रे रखि पारिबे कि दिस इज समथिंग व्हिच यू ओ टू मी, you have to pay this amount by this particular day. ए जिनसडा से कहिबो ताकू बुझना. तो से कहियो तू मते केबे कहिथिलु पचारियो से तो से कहियो हेडी एमती हमरो प्रॉमिसरी नोट वगैरह हेथिला हमरो एविडेंस डॉक्यूमेंट एना एमती कहि कि से देखेगी डिमांड करि पारे. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस द डॉक्यूमेंट्स दैट एविडेंस अ कंट्रैक्चुअल राइट टू क्लेम पेमेंट एंड व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड अपॉन डिलीवरी. एडार इफेक्ट केते जे रहबो ना जतलो डिलीवरी हबो सेते जेडा रहबो. क्लियर?
एटा होची नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो मीनिंग कोन हेतिला हम एटा को ब्रेक डाउन करिया मीनिंग माने कोन जेति कि तमन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से स्पेसिफाई कर 16 एलिमेंट स्पेसिफाई करछि बिल ऑफ एक्सचेंज चेक एंड प्रॉमिसरी नोट दीस थ्री थिंग्स आर मेजरली रिकॉग्नाइज्ड तो ए थ्री थिंग्स रे ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट थिबो कॉमन कोन कोन से कछ देखो फर्स्ट थिंग होछि इट्स अ document of evidence for the purpose of establishing legal right to ask for repayment of any debt given से जो हमको प्रोविजन टा कहछि सेटार सिंप्लीफाइड फॉर्मेट कोन ना इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो अदर नेम होछि डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस दिस इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग लीगल राइट कोन क्रिएट करछि ना लीगल राइट क्रिएट करछि जोडा कि कोन डेट रीपेमेंट टाइम रे हमको हेल्प हेई पारिबो एज सिंपल एज दैट देन से कहछि देखो therefore the age old rule that states no one can transfer a better title than the person who has the same does not hold good in such situations. The system of negotiable instrument gets regulated by Ministry of Finance. Eta ke regulate korchi? Please underline the Ministry of Finance. Kedi lekho arrow mark degi. Negotiable Instrument Act. Negotiable Instrument Act is governed by the Ministry of Finance. Ministry of Finance Ministry of Finance कौन करियो regulates plus supervises को वर्ड से यूज कर देखो ट्रांसफरेबिलिटी regulates plus supervises the transferability of negotiable instruments पूरा पैराग्राफ रे जति क्वेश्चन फ्रेम हे पारिबो एमति लेखिया अछि हैला Ministry of Finance regulates plus supervises the transferability of negotiable instruments. Negotiability से कोई नहीं, transferability कहूँच. Clear? Next point देखो. Negotiable instruments are those documents which are used to transfer money between designated persons. Please underline designated persons. Designated persons माने कौन? दिजन जगह टिके professional थे पे. Anyway, they are making a promissory note. Promissory note भितर जदि enter करछन्ते तांके कोन professional nature थिबे तो they have some particular designation. These instruments either contain a promise number 1 or an instruction to pay number 2 to others and assign sum of money at a particular time. This is कोन कोन instrument भितर कोन कोन थिबो negotiable instrument has को element से कहै छै देखा हमहु first thing होची promise or instruction to pay तीन जिनस आम लिखि पारिबा ओके एटा ओवर ये हेला फाइन
फाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रे से तीनटा जिंस कहछि फर्स्ट थिंग होछि promise to pay or instructions to pay promise to pay or instructions to pay or order to pay promise to pay instructions to pay or order to pay ए तीन टा जिंस रे गुटे जिंस से कॉमन कहिछि कोन ना असाइन्ड सम सेम रहबो एंड पर्टिकुलर डेट सेम रहबो हैला थ्री थिंग्स इन कॉमन कोन एडी मु लिखि दोछि ऊपरे असाइन्ड सम माने कोन केति के अमाउंट हमें क्रेडिट अछु ताको असाइन्ड सम प्लस प्रेस्क्राइब्ड टाइम असाइन्ड सम प्लस प्रेस्क्राइब्ड टाइम ये तीटा जिंस कॉमन रखिकी आमे तीनटा एस्पेक्ट्स देखुछु नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो तीन प्रकार इंस्ट्रूमेंट से रखिछि कोन पे ना टू फेवर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी फर्स्ट थिंग होछि हमर प्रॉमिस टू पे सेकंड थिंग होछि इंस्ट्रक्शन टू पे थर्ड थिंग होछि ऑर्डर टू पे क्लियर नेक्स्ट पॉइंट देखो these instruments could exist in varying formats but have certain distinct features within them such that they are easily transferable and mobile माने को movable very good movable होची mobile they are almost always in written format please underline written format always in written format माने कोन ए जिंस भी तीनटा रे कॉमन मु नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ता पढियार गुटे अलग तरीका कहूची हैला हमको जनरली एटा केमते हमें पढथिलु ना मीनिंग पढथिलु फीचर्स पढथिलु प्रॉमिसरी नोट ऑफ मीनिंग फीचर्स अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज रो मीनिंग फीचर्स अगेन तो सेमती नै हमको खाली एग्जाम ओरिएंटेड जिंस फिल्टर आउट करियर अछि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कम्स फॉर ओनली 5 to 6 marks but it's a very scoring thing कोन पे स्कोरिंग थिंग मु कहूची एडा रे ना फर्स्ट ऑफ ऑल जिंस होची कॉमन एंड इजी फॉर्मेट रे थाउची हम सेकंड थिंग होची डिफरेंशिएबल माने कंफ्यूज ही पारिबने थर्ड थिंग होची फॉर्मेट सिंपल रहबो तमरो क्वेश्चन अटेंड करबा दैट्स व्हाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी स्कोरिंग तो एडा कोन गुडे कहला आउथरे से ना इट्स ऑलवेज इन रिटन फॉर्मेट एडी मु लेखुची काइंडली जत्ते तमे पाख पाख ही जिंसडा लिखबो सेते जल्दी साडा रिवाइज होबो सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर always in written format always in written format negotiable instruments are always in written format clear contains a definite time for discharge of payment obligations and has a specific persons mentioned there मु अगेन कहि देथिले टाइम पीरियड विषय आ गुटे जिंस से कोन कोचे पेमेंट ऑब्लिगेशंस ऑब्वियसली जदि तुमको गुटे पर्सन ऑब्लिगेटरी अछि गुटे पर्सन लायबल अछि देन ओनली यू कैन डिमांड सम मनी फ्रॉम हिम देन से कोन कोचे स्पेसिफिक पर्सन्स मेंशनड देयर कहियो कि को पर्टिकुलर पर्सन को आमे दबा चेक रे लिखि कि दोछ ना से पर्टिकुलर पर्सन रो नाडा तो स्पेसिफिक पर्सन्स भी मेंशन हेगी थाउच हला एति कि जिंस एडी रिक्वायरमेंट देन से कोचे देखो in most day-to-day transactions in marketplaces or mandis different type of trades negotiable instruments have gained importance these instruments can be transferred by delivery please underline by delivery by endorsement and delivery केमती ट्रांसफर होबो एडी पॉइंट नंबर 1 मु लिखली written format plus specified person written format plus specified person then से कुछ देखा these instruments are transferred by first point होची delivery second point होची कोन endorsement plus delivery I'll explain you the meaning endorsement plus delivery endorsement plus delivery माने कोन giving the person directly लेखो मीनिंग ना giving the
negotiable instrument, giving the negotiable instrument directly, negotiable instrument directly to respected person, respective person, giving the negotiable instrument directly to the respective person, को person को साडा दबार अछि ताकू तमे जाई डायरेक्टली देई देलो. एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी रो मीनिंग होची, वेरी गुड, गोटे पर्सन को से दोची से पर्टिकुलर पर्सन को दबा पई. सो यू आर assigning the task of assigning the task of delivering the assigning the task of delivering the negotiable instrument to the specified person, assigning the task of delivering the negotiable instrument to the specified person through another person. तुमको ए मीनिंग लिखने का मेन रीजन होची, दे आर आस्किंग दिस पैराग्राफ एंड दे आर आस्किंग यू टू नेम द थिंग. से टर्म ला कोन सेटा एक्सप्लेन करियो तुम को नांदी, एक्सप्लेनेशन टा देके टर्म ला बुझिया पोचंदी, इट इज वेरी डिफिकल्ट. जदी देखो जदी से कोइ द एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी रो मीनिंग टा को, तो मे बी यू विल गेट सम आईडिया, किछि ना किछि तुम लिखि दे पारियो से. बट जदी से मीनिंग टा देके तुमको टर्म टा पचाची, सो यू मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग देयर. क्लियर अंडरस्टैंडिंग थिले जाई से पर्टिकुलर टर्म आगाले तुम जानि पारियो. तो सेटा रिवर्स होची, दैट्स व्हाई जेति के लिखोची मु लेखेबा जिंस होची एग्जाम ओरिएंटेड, मार्क करबा जिंस होची एग्जाम ओरिएंटेड, बाकी सब होची कोन बेसिक थिंग्स. नेक्स्ट देखो, the entire act has been divided into many sections such as definition of various instruments, incidental terms that of rights and liabilities of parties to such transactions involving negotiable instruments, how negotiation and its subsequent payments are discharged, and provisions relating to dishonor and compensation. So it's giving a basic idea कि act भितर कौन जिंस पड़िबो. Then देखो, negotiability is a feature that is distinct from the concept of transferability. आमे आगु already discuss करछु, negotiability has a key point of difference between transferability. By mere delivery or endorsements and delivery, the acquirer of the negotiable instrument gets the best title to the instrument. Please underline, by mere delivery or endorsements. Delivery किंबा endorsements किंबा खाली delivery करले कौन हबो ना, braces भितर रखो. The acquirer of the negotiable instrument, acquirer माने के, the person who is holding the negotiable instrument, the person who is having the negotiable instrument gets the best title. Please underline, best title to the instrument by becoming the holder, which is not the case in instruments that are not negotiable, and can bestow such rights by the procedure of sale or means of transfer. Ultimately से गुट्टे जिंसो कहूची, जो जिंसो negotiable ही पारिबो, माने जदी देखो चेक टा तमे जणो दोचो तो देई पारिबो सर, बट जदी मु पेन टा दोची तो पेन टा किए लेले नहीं पारियो, पेन ऊपर मो ना लिखि देई पारिबो, देले मध्य सेडा किछि वैल्यू नै. तो सिए कहूची negotiable ही पारिया जिंसो जागो जोडा अछि सेडा negotiability हिसाब रे हम कंसीडर करबा, आ जोडा ही पारिया त ही पारिया नै एक्ट कहले कोन हो, बुझि पाछो ना. दैट्स व्हाट इट्स टेलिंग. तो सेथरे किछि इंपोर्टेंट जिंस नै, खाली गोटे जिंस मार्क करियो कोन ना, बेस्ट टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट. जागो जदी नेगोशिएबिलिटी माने अंडर रे जदी आसुची किछि तो सेडा बेस्ट टाइटल टू इंस्ट्रूमेंट ता दिया हो. एसेंशियल फीचर्स देखो, इट मस्ट बी इन राइटिंग, मो अगेन चार्ट कोनेबी, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइन्ड बाय द मेकर और ड्रॉअर, जे भी मेकर और ड्रॉअर अछि दि जण जाके साइन करे अछि. देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे थिबार अछि. आ सेटा कोन अनकंडीशनल हेबार अछि, अनकंडीशनल माने कोन, without having any underlying condition, subsequently किछि कंडीशन ले डाउन न करिकि थिबार अछि. It must call for payment in money and money only, खाली मनी आगा दबार अछि. से कहयो ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जे भी धरछि से पैसा सहित त झियो मते दबार अछि हैला. आ से कहयो त घर दबार अछि नै हबनी हैला. से कहयो मते पार्टी को डाकिया अछि हबनी, खाली मनी एंड मनी ओनली. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रो पर्पस होछि मनी एंड मनी ओनली. It should call for a payment of certain sum, से सम टा डेफिनेट हेगी थिबार अछि, प्री डिटरमाइंड हेगी थिबार अछि.
Then say coach the property in the instrument may be passed in two ways. Say again coach mere delivery or endorsement and delivery. The consideration is also presumed to have passed. माने कौन कौचे सी अच्छा जदि गुटे पर्सन आउ जण को किछि पैसा लोन माने लोन नीची देन ठीक अछि जदि से किछि जिंस ताको बिकिला आ ये कहछि को 3 मास पर पेमेंट करबी तो कोन से किछि जिंस ताको देछि इन कंसीडरेशन से ताको किछि पैसा दोछि तो सी जो आगरे कंसीडरेशन देबा आगरे जो जिंसटा हेछि तो आमे प्रेज्यूम करिया कोन से जिंसटा ऑलरेडी से पेमेंट कर देछि किबा ट्रांसफर नी जेछि माने अल्टीमेटली कोन कहछि सी ना सब जिंस जहा भी जा लगी पैसा रिसीव हे पारिबो से सब जिंस रो जहा भी जिंस अछि सेटा आगरो हे जेछि माने से गुड्स बिकी देछि किबा लोन दे देछि किबा लोन साइन हे जेछि कि घर ट्रांसफर हो जेछि सब जिंस सब्सिक्वेंटली से आगरो बुझिबा दर क्लियर एज सिंपल एज दैट एथरे इंपोर्टेंट जिंस मार्क करो द प्रॉमिस और ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल प्लीज मार्क इट इंपोर्टेंट the promise or order must be unconditional. There must not be any underlying condition. There must not be any underlying condition. There must not be any underlying condition. Clear? बुझी पालो? Then देखो what do you mean by promissory note? Section 4 of the Act defines promissory note as an instrument in writing. Again, it's in writing. Not being a bank note or a currency note. हैला सेटा currency note हे पारिबो डायरेक्टली और बैंक रो हेतिबा DD वगैरह भी हे पारिबो containing an unconditional undertaking. Please underline unconditional undertaking. Unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Promissory note meaning कौन? Unconditional undertaking having a promise. Unconditional undertaking having a promise in writing, having a promise in writing signed by maker एडा होची तार कोन मीनिंग आ तार पर्पस होची it is a legal promise. It is a legal promise for timely. It is a legal promise for timely repayment. It is a legal promise for timely repayment of prescribed. It is a legal promise for timely repayment of prescribed sum or amount. It is a legal promise for timely repayment of prescribed sum or amount to specified person either to him directly
person he specifies. To person he specifies. It's the meaning of a promissory note. बुझी पारल? It's the meaning of promissory note. देखो गुटे लाइन जहाँ भी लिखेली मु पूरा एडा होची गुटे सेंटेंस एंड एडा होची गुटे सेंटेंस ए सेंटेंस भितर सब किछि जिंस अछि माने ए सेंटेंस जदि तमे मन रखी कि जाउचो तो ए भितर किमती क्वेश्चंस आंसर करबो सेडा म बे सिखेबे देखो फर्स्ट थिंग होची मु कहली प्रॉमिसरी नोट रो मीनिंग स्टार्ट करली इट्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग हैविंग अ प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर आई हैव कवर्ड 3 एस्पेक्ट्स हियर ध्यान देकी सुनो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग माने होची कोन अंडरटेकिंग माने होची दि जण भितर थिबा कोन गुटे डॉक्यूमेंट ऑफ सिग्नेचर अनकंडीशनल माने कोन दे आर नॉट हैविंग एनी कंडीशन बट ओनली अ प्रॉमिस से भितर किछि भी कंडीशन नै गुटे प्रॉमिस अछि स्ट्रेट अवे गुटे प्रॉमिस अछि कि आई एम पेइंग दिस पर्टिकुलर सम टू दिस पर्टिकुलर पर्सन ऑन दिस डेट बस सेति गया जदि एडा न हेले कोन हबो तो मो सते भल से कथा हबो सेतळा देबी हला मते जदि इच्छा हला मु सेतळा देबी हला मते कंडीशन उडा वेदर कंडीशन भल लागले सेतळा देबी इन दी फालतू फालतू माने कंडीशन वगैरह थिबोनी भितर देन से कोछि पर्पस कोन इट्स अ लीगल प्रॉमिस फॉर टाइमली रीपेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सम लीगल प्रॉमिस खाली प्रॉमिस नहीं लीगल प्रॉमिस माने कोन इट्स बाइंडेड बाय लॉ कोन कोछि ना रीपेमेंट पेमेंट नहीं रीपेमेंट तो रीपेमेंट माने कोन ऑब्वियसली सेटा क्रेडिट हेथिबो रीपेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सम टा डेफिनेट थिबार अछि आ पर्सन टा डेफिनेट थिबार अछि इधर से पर्टिकुलर पर्सन को हम डायरेक्ट दे परिया किबा से पर्सन जा हम स्पेसिफाई करछि ताको हम दे पार सो दीस आर द थिंग्स कवर्ड हैला in a promissory note there are only two parties केतरा पार्टी इन्वॉल्व हेके अछंदी two parties one is the payer and the other is the payee बुझि पाला पार्टीज के अछंदी good girl two parties payer payee payee कौन कहे सब बड़े दे कहे payer कौन कहे दे कहे that's why he is a payee payee से डाकियो हाँ दे से कहे such instruments can also be negotiated when endorsed and delivered or be delivered only माने जदी हमको कुआ होची कि टेक्स्ट बुक हमो टिके मोटा दरकार तो एमदी जिंस हम रिपीट करी सदा मोटा करी पारे इन केस यू आर आई मीन प्लानिंग टू हैव अ पब्लिकेशन फ्यूचर रे जदी टेक्स्ट बुक वगैरह जदी मोटा करे अछि तो एमदी रिपीट करी कि करियो सो इट्स अ वेरी इररिलेवेंट स्टेटमेंट एडा इंपोर्टेंट मार्क करो provisions relating to currency notes are regulated by other pieces of legislation including the Reserve Bank of India Act 1934 and the Banking Regulation Act 1949 ए दीटा जिंसर इन्वॉल्वमेंट एडी कोन पे आसिला देखो प्लीज अंडरलाइन करेंसी नोट जहां भी अछि गुटे थर क्वेश्चन भी आस्थिला करेंसी नोट्स आर रेगुलेटेड बाय व्हाट पिलाने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लिखि के आछन हला एटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नै करेंसी जोड भी इन्वॉल्व ही होची ऑलवेज रिमेंबर एटा सेटा बैंकिंग अंडर पड़ासी नले आरबीआई अंडर पड़ासी बुझला करेंसी नोट्स ने वी आर हैविंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स तमे जान छ बड़ बड़ करेंसी प्रिंट करिया पई वी आर हैविंग आरबीआई बट से जिनसटा किमती कैरी आउट करियो सेटा के देखिबो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देख इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तापर देखो गुटे केस लो क्वेश्चन से कहि छी The High Court in Singh versus Madan Das Panika AIR 1976 held that an instrument is a promissory note if there are present the following elements. कौन elements? मु कहिथिले सबुडे important जिंस होची unconditional undertaking. The sum of money should be certain. The payment should be the order of a person who is certain or to the bearer of the instrument and the maker should sign it. मु कौन लिखेली सब जागो एडा हाई कोर्ट कहिछि मु कहिनी हाई कोर्ट कहिछि मु लिखि देली हैला तो केस लो क्वेश्चन जदि तुमको आसीबो मु अगेन एंड अगेन कोची चारटा जिंस बारंबार देखियो पड़ियो अनकंडीशनल होची फर्स्ट थिंग सर्टेनिटी होची सेकंड थिंग थर्ड थिंग होची गुड थर क्वेश्चन आस्थिला कोन प्रॉमिसरी नोट जहां भी अछि प्रॉमिसरी नोट लिखाई छी कि से पर्टिकुलर पर्सन को आका दब अगेन ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी कोन हला ध्यान से सुनो डेट ऑफ डिलीवरी कोन हला से पर्टिकुलर पर्सन रो एजेंट आस्की कोची कि माय पर्टिकुलर बॉस हैज आस्क्ड मी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम यू तो एक केस से पर्सन दा दबो न दबन से कोची नाइ जदि प्रॉमिसरी नोट में मेंशन हेची मु से पर्सन को आगा देबे तो एक केस ता जतळ को हाई कोर्ट को गला तो व्हाट हैपेंड वाज इट वाज डिसाइडेड कि से डायरेक्टली से पर्सन को दे पारे नॉट द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट
टू द इंस्ट्रक्शंस पे माने जे भी इंस्ट्रक्शन दोची से पर्टिकुलर पर्सन का को कहयो ताको भी तमे देई पारो तो एडा ओडे केस रा फुला मो डिस्कस करते यू कैन गो थ्रू द स्कैनर्स आल्सो से क्वेश्चन दा आई थिंक मिनिमम अनलेस सेडा एमटीपी रो क्वेश्चन हे नथिबो हले कहली तापर देखो सी थ्री टाइप्स को कैटेगराइज करछि फर्स्ट थिंग होछि प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन एंड टू द बियरर तीनटा से कैटेगराइज करला माने देखो बियरर माने ओनर माने डायरेक्टली ओनर जार ना से लिखि छि ये ओनर सर्टेन पर्सन माने पर्सन whom ओनर मेंशन्स एटा टिके एग्जांपल देई मन रखो माने देखो हां मु थर्डटा लिखि कोच ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन माने पर्सन who receives on behalf of the owner बुझे पाला person who receives on behalf of the owner bearer माने जे बियर करछि ओनर बुझे पाला माने जा ना रे से इंस्ट्रूमेंट कटा हेथिबो बुझला हम कहू देखो एग्जांपल फॉर एग्जांपल मु स्नेहा को ओ करछि 5 लाख रुपीस सो शी मे बी द बियरर बट सी जदि ता बिहाफ रे स्वागत असला रिसीव करिया पई तो स्वागत ए कैटेगरी रे आसी बट स्नेहा ओ करछि 5 लाख रुद्र को तो रुद्र ए कैटेगरी रे आसी सेडा कहछि कि स्नेहा कहछि कि डायरेक्टली ताको दे सो सेडा सेकंड कैटेगरी रे आसी बुझि पाला एनी डाउट बुझिला ना एग्जांपल ता ए तीनटा टाइप जहां भी अछि लेखो एडी मेंशन करो एग्जांपल तम हिसाब रे तमे दे पारियो प्रैक्टिकल ना सीरियसली लैपटॉप जहां भी अछि हमरो मते एमती गुटे वाइब दोथि जिंदगी के मो ऊपर टिके रागी अछि म तको मन अछि यार थोड़ा और थोड़ा बस हेला माने तमनो मने एडा को मने मते के मने सीरियसली टाइप्स देखो एबे तमे मन मन गाली करथि कि यार केते लेखो चंदी कई बट पर यू विल थैंक योरसेल्फ कि भले ला हम लेखुथि एबे मते गाली करियो बट पर तमे ने लेखियो हैला फर्स्ट थिंग हो देखो सर्टेन फर्स्ट थिंग बियरर सेकंड थिंग होची सर्टेन पर्सन थर्ड थिंग होची कौन थिला ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन फर्स्ट थिंग होची बियरर सेकंड थिंग होची सर्टेन पर्सन एंड थर्ड थिंग होची ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन क्लियर मीनिंग दा से पाखरे लिखैछि तो ऑलरेडी म लेखोनी सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉमिसरी नोट तमरो सब प्रॉमिसरी नोट रो सब जगह पॉइंट पुडी रहिला एडी रहि एतिके तमरो पूरा प्रॉमिसरी नोट रहि जदि तमने लिखिबार अछि तो माने मो लेखुची एडा मो कोनी तमने लिखे पई स्टिल आई एम राइटिंग हियर हाई कोर्ट्स मेंशन ऑफ एलिमेंट्स High Court's mention of elements to be compulsorily present in a promissory note माने देखो तमे जे तोडको ए जिंसटा तम मन अछि म जानछि बट स्टिल जदि क्वेश्चन पळा आछि कि हाई कोर्ट कोन तमको पर्टिकुलरली मेंशन करबा को कहउछि what are the elements that high court is asking to have in a negotiable instrument for it to be called a promissory note जदि एमती क्वेश्चन तमे देखि दोजो मे बी से एग्जाम प्रेशर यू कैन हैंडल इट तो दैट्स व्हाई हमको से जिंसो अगेन जदि लेखिया पड़ला तो कोन थिला प्लीज रिपीट फर्स्ट थिंग होछि कोन थिला रे अनकंडीशनल undertaking to pay unconditional undertaking to pay second कोन अछि
certain sum of money माने once to the promissory note रे mention हेई जाउची तो the particular person can't change it हला 5 लाख रुपीस जदी mention हेई जिस तो 5 लाख आ जदी तांको भीतर आ किछि एग्रीमेंट ता होची so that's totally different सेटा promissory note अंडर आसीबोनी जदी मनर सी केस कला कि आमे 5 लाख रुपीस तो रिपेमेंट कर दो बट फोन रे डिस्कस हेतिला कि एरा 5,50,000 काहे गेले कहले इन्फ्लेशन कैपिटल ऐड करछ तो सी कहूची कोन नै 5 लाख का देबे तो same person 5 lakh में केस कर परियो he can't file for the extra 50,000 there because सेटा promissory note रे मेंशन हेनी तो माने एलिमेंट थिबार मीनिंग होचे सेटा हाई कोर्ट सेटा भी रेस्पोंसिबल नै बट जदी से कोन 5 लाख कोइ 4,50,000 ना होचे एडी भी अमाउंट 50,000 ना डिफरेंस अछि बट स्टिल he can put a case on it बुझि पाछन डिफरेंस ता तो ए पॉइंट रे तमर केस ला आसीबो तमको से मीनिंग फीचर डेफिनेशन नै सब पचरियोनी नै हिजा नीति पचरियो हाई कोर्ट एलिमेंट्स रखी छै एली कहले कोन गुटे गुटे एलिमेंट रो मीनिंग तापरे कोन कहै छै सी ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थर्ड पॉइंट होची ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तापरे signature of the maker ने कोन एडा होची मैंडेटरी जिंस मेकर रो सिग्नेचर ता थिबा दरकार मैंडेटरी सिग्नेचर ऑफ द मेकर क्लियर एडा होची प्रॉमिसरी नोट किछि डाउट अछि एथरे माने इमिडी आ दीटा जहा भी हबो एटा एक्सचेंज आ ये और डिफरेंस आ भी देखिबो तो बस आखि आगरो जिवो एग्जाम आगरो ने पिला ना गोटे थाउ छिना कि गोटे जोश रे हम पढिया हला गोटे जोश रे पढी पढी जिबा स्टार्टिंग रे बट एग्जाम आगरे टिके करी के दे देलो भल लागियो तापर देखो Section 5 defines the expression bill of exchange as an instrument in writing. Again, same hobo jinsi jaga. An unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or the order for certain person or to the bearer of the instrument. Same lauchi. Same but different. Hala. One difference achi dekha. Directly dekha hame padiba. Promissory note and bill of exchange. Difference kon? Section 4, Section 5. देखे से 5टा पॉइंट कहि छै हमें 6टा पॉइंट कहि परिया कोन 6th पॉइंट हे परिया मते के कहयो त माने एटलीस्ट के प्रोफेशनल अच्छा मु कई पॉइंट ता प्रॉमिसरी नोट स्टार्ट्स विथ पी बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट्स विथ बी बुझिला पॉइंट नै कि डिफरेंस नै कि बस बुझिला सीएम में जैसे वैसे ही जवाब दो जदि 7 मार्क में पचारची टेक्स्ट बुक रे 5टा पॉइंट देची हाउ कैन वी ऐड अदर टू बुझिला तापर के प्रॉमिसरी नोट हैज सम हिंट ऑफ प्रॉमिस बिल ऑफ एक्सचेंज माने बिल नै हला हेले तमे कहि परे कोन प्रॉमिसरी नोट माने हमें प्रॉमिस करी की काहू कहि परिया बट बिल ऑफ एक्सचेंज माने कोन होटल रो बिल भी बिल ऑफ एक्सचेंज बिकॉज़ बिल भी दोजो से किछि एक्सचेंज भी करछि हम एडा भी ऐड कर परिया हला फालतू जिंस ऐड करियोनी मु कहू छी जनरली माने केते पॉइंट्स एमती थिबो जोडा कि पूरा पूरी इररिलेवेंट माने तमे जो दी प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज रो डिफरेंस रा देखिचो खाली गुट्टे की दीटा पॉइंट थिबो एते पॉइंट हबोनी बट दे आर आस्किंग फॉर 7 मार्क्स तो तमे केमती लेखिबो मु जो चार्ट बनेथिली सेडा रो हिंट न आ एबे जोडा कहछि सेडा सीरियस निया फाइन देयर आर 2 पार्टीज देयर आर 3 पार्टीज देखो एडा गुटे कथा हेज 2 पार्टीज 3 पार्टीज से पार्टी करला दि जणा देखला मेकर ऑफ पे ये पार्टी करला 3 जणा रखले ड्रॉयर एक्सेप्टर पेई it contains a promise to pay it contains an order to pay से कोची मो प्रॉमिस करछि I will pay you by this time साइन हेला बस सला सेटा कोन ऑर्डर करछ you have to pay this particular person this amount of money काहे 3 जणा अछि देखनो ड्रॉयर एक्सेप्टर पेई
ड्रॉयर एक्सेप्टर पेई जणे जणे एमिति अथॉरिटेटिव पोजीशन रे थिबो जे कि कोन सी ऑर्डर करबो ताकि कि तू से पर्टिकुलर सम ऑफ मनी से पर्सन को दबाओ बाध्य बाय दिस टाइम बुझी पारछ तो आ जदी मेकर ऑफ पेई दि जण आक अछंती जदी ऑर्डर करले कि सुनियो कि से धाई पळेबा कोडी बुझला ना नहीं सिंधिया का दबाव बाध्य एथरे भी दबाव बाध्य सेथरे भी दबाव बाध्य से कहूची एडा गुटे प्रॉमिस द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहूची बुझिला ना मु तुमको से नेक्स्ट क्लास रे इंस्ट्रूमेंट गुडार फोटो देखेबी जोडा कि तुम जानिबो कोन से प्रॉमिसरी नोट रे जहां भी स्टेटमेंट थिबो ना सेडा बहुत सानो थिबो सेथरे खाली प्रॉमिस थिबो कि तू ए पर्टिकुलर सम ऑफ मनी ए पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट कर कोन तांको भितरे हेतिबो म्यूचुअली तो भितरे हेतिबो बट एडी कोन जानछ ना अदर पार्टी रो इन्वॉल्वमेंट ता पड़ास दे आर हैविंग थ्री पीपल हियर के ड्रॉयर एक्सेप्टर एंड पेई बुझि पाला तो promise is normal in nature order होची गुटे पर्टिकुलर पर्सन बाइंड करछ एडी भी बाइंड करछि बट एडी भी लॉ बाइंड करछ बुझि पाला ना से प्रॉमिस ता ब्रेक करले चाहि कि लॉ रो इन्वॉल्वमेंट हबो बट एडी कोन जानछ ना से जिंसडा हेबा आगर आगर से इन्वॉल्वमेंट पड़ास बुझिला ना न हेबा पे इन्वॉल्वमेंट पड़ास सो एडा होची जल्दी सेडा हला तो से जिंसडा माने आसी पारियो पिक्चर भीतर को बट एडी से कोन से फ्रॉड प्रिवेंट करिया पई दे आर हैविंग अनदर पर्सन इन्वॉल्वमेंट बुझि पारछ ना ना कोन डाउट अछि पछरी पारिया गुटे पॉइंट कोन डाउट अछि हां पछर क्लास आटिके पढला पर पछरे फाइन फाइन नो कंडीशन shall be made in a promissory note a bill may be accepted conditionally please underline accepted conditionally bill of exchange conditional ही पारिबोनी it is not a conditional offer accepted conditionally माने कोन देखो तीनटा जिंस तीनटा पार्टी एडी इन्वॉल्व हेके अछंती जणे कहला कोन तू ए पर्टिकुलर टाइम रे सी पर्सन रू तू अमाउंट ये करबा तो सी कोन ताको ऑर्डर करले बट गुटे पर्सन कहूची कोन माने जे अथॉरिटेटिव पोजीशन रे अछि दैट पर्सन इज मेंशनिंग दैट कि तू ए पीरियड जायागा मो लायबल मो जहा भी हैंडल करी 2 मंथ से तो सरियला मोर आ कुछ ए रोल रहबो सो दिस इज एक्सेप्टिंग कंडीशनल बट कंडीशन ना जदी बिल ऑफ एक्सचेंज रे अछि नाही कहूची माने से जिंसटा हे पारियोनी बट जदी थिले केमते हे थांदा ना ए अमाउंट ऑफ मनी तू जदी ए कामडा सरलो की प्रॉफिट हमको डिराइव करलो हम ऑर्गेनाइजेशन से देन ओनली मु देबे इन जदी किछ जिंस सेटरे मेंशन हेची दैट इट कैन बी कॉल्ड कंडीशनल बट एक्सेप्टिंग कंडीशनली माने कोन जहा भी एक्सेप्टेंस अछि ताकू किछि कंडीशन उडागो असाइन होछ क्लियर लास्ट पॉइंट देखो the liability of the maker of the promissory note is primary and absolute देखो एडा हम कहथुनी डायरेक्टली डील हे पारिबो सेडा प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट माने तो माने आम भीतर जदी प्रॉमिसरी नोट ता साइन हेची तो मो डायरेक्टली कोन ओ करछु तुमको सॉरी तमे ओ करछु मते मो तुमको डायरेक्टली डिमांड करि पारिबो तो प्राइमरी लायबिलिटी कार इन्वॉल्वमेंट नै प्राइमरी रो मीनिंग कोन प्रिंसिपल लायबिलिटी सेड बट एडी कोन द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेकेंडरी एंड अनकंडीशनल secondary and conditional माने कोन गुटे पर्सन रो इन्वॉल्वमेंट सेथरे अछि there is a particular person who is getting involved इमिति नै कि से जिंसडा फ्रॉड हबो ali कहिले to prevent बुझि पाछो त गुटे आदा मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस म कहि पारि कि प्रॉमिस हो ऑर्डर हो से बाध्य हे कांगेले लीगल एस्पेक्ट अछि पॉइंट ऑफ डिफरेंस कोन एथरे लीगल एस्पेक्ट पर आसीबो जदी पेमेंट न करि परले बट एथरे कोन प्रिवेंशन पे आग्रह को पड़ास क्लियर बुझि पाला ठीक अछि नेक्स्ट क्लास में हमें देखिया बिल ऑफ एक्सचेंज रो डिटेल्ड मीनिंग एंड चेक लिसन फाइन थैंक यू